Assalamu alaikum, dear students and viewers. Hope you are doing well and hope you are fine. Uh, Today, as you all know that we have already discussed about the consequences of visual class, why we are organizing, why we are arranging such kind of classes specifically for the students, but not for only our students. We are arranging this specific class for a whole of the students in the country nationwide. We are basically starting. We want that people get benefit from this class all over the Pakistan, even all over the world, but specifically for the students of Pakistan, and specifically I'm talking about the federal board students who are basically related to federal board students for first year HSSC-I and HSSC-II. This virtual class system is really beneficial for our students, and it's a really you can say that it's a very detailed discussion about the topics. We will take the topics one by one, as we have already discussed about the you can say that as we have already discussed about the verbals and its types. We have discussed about the gerunds and the participle, and the last type of the verbal was infinitive that was left. But we shall also take some sort of an overview before that, for the reminder of the students and for the reminder of the viewers. So, dear students, we are basically talking about the verbal. What are verbal? What are its types? Basically, verbals are the form of a verb. The verb is functioning as is some other parts of speech. जहाँ पे verb, I have already told you that we will take bilingual things. हम जो है वो bilingual होके चलेंगे, जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनकी ईज़ीनेस के लिए हम उर्दू और इंग्लिश में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि हर एक कॉमन पर्सन तक हमारी इस बात को, हमारे इस पैगाम को ईज़िली समझा जा सके। तो हम वर्बल इज़ बेसिकली फ्रॉम द वर्ब क्या होता है? A word which shows an action in a sentence is called basically verb. So, okay, verbal जो है, verbal क्या है? Verb जब अपने function से अलावा किसी और part of speech के function को role play करेगा, उसे हम verbal कहेंगे. Basically, we are having three types of verbal. There are three types of verbal. First of all, gerunds. Second one is participle, and the third one is infinitives. Let's go towards the next slide, that is about the gerunds. So, dear students and viewers, we have already discussed about it's an overview, it's a kind of a reminder for the students. हम एक याद दिलाने के लिए दोबारा से gerund की तरफ आते हैं. What is basically gerund? A gerund is a verbal that acts as a noun. These verbal end in ing. Gerund verbal की एक type है, यानी कि verb की ही एक form है जो कि अपना रोल कैसे प्ले कर रही है. Gerund basically अपना role as a noun play कर रही है. तो we have already discussed that. Dear students and viewers, you should remember that. What is noun? Noun is a name of a place, person, or a thing, or an activity, or a feeling, and anything in this world is basically a noun. A gerund is a verbal that acts as a noun. These verbal end in ing, यानी कि ये जो verbal होते हैं, ये verb होते हैं, रोल प्ले करते हैं नाउन की, और इनकी साख्त किस तरह की होती है और उनकी फॉर्म किस टाइप की होती है. सो बेसिकली इनकी फॉर्म जो होती है वो ing के ऑक्सिलरी के साथ होती है. जैसे हमने एग्जांपल दी थी पहले भी, टॉक इज बेसिकली अ वर्ब, एंड अगर हम इसको जेरेंड बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ing लगाएंगे. जब हम इसके साथ ing पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टॉकिंग. और टॉकिंग इज बेसिकली आल्सो कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, जो कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज करते हैं, और प्रेजेंट और उसके अलावा हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी यूज करते हैं. इसके अलावा भी जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम ing फॉर्म को यूज करते हैं. और उसके अलावा हम वर्बल की टाइप जर्न में भी ing फॉर्म को यूज करते हैं. सो सबसे पहले जो हमने जहाँ पे
लिया है वो है वॉचिंग। देखिए कर्सर जो है वो वॉचिंग पे है। वॉच इज बेसिकली अ वर्ब। अगर हम इसको एज अ वर्ब रोल प्ले करवाना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे ही वॉचेस अ टीवी, ही वॉच्ड अ टीवी, ही हैड वॉच्ड अ टीवी। हम इस तरह से इसको एज अ वर्ब इसका रोल जो है वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब हम इसको आएंगे लेके जेरंड पे, सो व्हाट इज बेसिकली जेरंड, जेरंड पे ये कैसे रोल प्ले कर रहा है, हम इसके साथ आईएनजी पुट करेंगे। देखेंगे स्पेसिफिकली मैंने इसको हाईलाइट किया और इसको अंडरलाइन किया कि ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो स्टूडेंट्स की वो इस चीज को समझ गए। वॉचिंग टीवी इज माय फेवरेट पास टाइम। Watching TV is my favorite pastime। यानी कि हमें clearly, if you have the concept of the noun, तो हमने यहाँ पे एक चीज clearly हमें ये समझ में आ रही है कि watching is not performing the role of a verb. Here, the watching is performing the role of a noun. So it is basically a type of a verbal that is gerund. Another example we take, that is swimming. Swimming is the best exercise. We have already discussed about the swimming. Swim is a form of a verb. First form is the swim, second form is the swam, and the third form is the swum. Swimming is a best exercise. Swimming is a best exercise. यानी कि तैरना एक अच्छी, एक बेहतरीन वर्जिश है। तैरना। अगर इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये भी आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि जेरेंड जितने भी होंगे उनका उर्दू में मतलब ना से बोलना मिल बनेगा। यानी कि अगर हम उसका उर्दू मीनिंग बनाएंगे तो उसके लास्ट और उसके आखिरी अल्फाज जो हैं वो ना बनेंगे। जैसे टॉक की बात की तो टॉकिंग हमने जब हमने लिखा तो वो टॉकिंग अगर हम उसका उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं वो टॉकिंग जो है वो बोलना हो जाएगा। इसी तरह वॉच है, वॉच को जब हमने वॉचिंग किया एज ए जेरेंड इसको यूज किया तो वो बोलना के मायने उर्दू में उसके बनेंगे। अगेन हम जब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आएंगे, आई लव कुकिंग। कुक इज बेसिकली अ वर्ब। कुक, कुक्ड, कुक्ड इज बेसिकली ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमने आईएनजी पुट करके इसको एज अ नाउन रोल प्ले किया तो ये जेरेंड है, वर्बल की टाइप है। आई लव कुकिंग। इसमें अगर लेट्स अनदर एग्जांपल की तरफ जाते हैं, दैट इज अहमद इज गुड इन रनिंग। अहमद इज गुड इन रनिंग। रन, रेन, रन, ये थ्री फॉर्म्स हैं रन की। यहाँ पे हमने आईएनजी पुट करके अहमद इज गुड इन रनिंग, यानी कि अहमद दौड़ने में तेज है, अहमद भागने में तेज है। ये देखिए आखिर में ना भी आ रहा है, यानी कि नून भी आपको नून अलिफ या नून ये जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जेरेंड की बेसिकली उर्दू में निशानी है। और उसको अगर हम उर्दू में मजीद एलैबोरेट करें तो जेरेंड क्या है, मस्दर। क्या है, मस्दर। उर्दू में इसके लिए जो स्पेसिफिकली ग्रामेटिकल जो वर्ड यूज होता है दैट इज बेसिकली मस्दर। अब हम बात करते हैं अनदर एग्जांपल की तरफ, दैट इज praying is a tool to success। praying is a tool to success, यानी कि दुआ मांगना जो है वो कामयाबी की एक कुंजी है, कामयाबी की एक सीढ़ी है। praying is a tool to success। so pray, prayed, prayed। यहाँ पे pray जो है वो एज ए नाउन यूज हो रहा है तो हम उसको जेरेंड कहते हैं। praying, prayed, prayed, pray। ओके, हम चलते हैं अपनी सेकंड टाइप ऑफ वर्बल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज बेसिकली the participle। The definition of a participle is that the participle is a type of a verbal or a type of a verb which acts as an adjective। तो अब हमने हमने पार्टिसिपल को जब हम बात किया तो वर्बल की बात की। वर्बल जो है, वर्ब की वो फॉर्म्स जो होती हैं वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को फंक्शन करती हैं। तो एडजेक्टिव इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच। अगर हम आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर रिमाइंडर के लिए ये बात करते हैं कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट क्वालिफाइज अ नाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। अच्छा, इसके आगे हमने इसकी इट हैज टू फर्दर टाइप्स। ठीक है, जेरिन में हमारे पास टू फर्दर टाइप्स नहीं थी, बट पार्टिसिपल में हमारे पास इसकी टू फर्दर टाइप्स भी मौजूद हैं। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, अगेन वही बात जो मैंने पिछली बात की थी कि अच्छा इसको हमने कैसे बनाना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो अगेन वही जेरेंड की तरह से आईएनजी फॉर्म में बनेगा, यानी कि अगर हम टॉक है टॉकिंग कर देंगे, वॉच है वॉचिंग कर देंगे, स्विम है स्विमिंग कर देंगे, ब्रूम है ब्रूमिंग कर देंगे, तो ये बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। लेकिन रोल क्या प्ले करेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। रोल ये
as an adjective role play करेगा. Then after that, the second type of the participle is that past participle. अच्छा, इसकी निशानी ये है कि ये या तो ed form एंड पे हो रहा होगा या en form, यानी कि talk, talked, talked, construct, constructed, constructed, show, shown, shown. ठीक है. Eat, eat, eaten, eaten. इस तरह से ये past participle बन जाएगा, वर्बल की टाइप बन जाएगी. अभी एग्जांपल की जब बात करते हैं, हम इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग लेके नहीं चलते बिकॉज हमने इसकी इन्फिनिटिव टाइप की तरफ भी जाना है. तो एग्जांपल क्या है? द ब्लूमिंग फ्लावर्स इन द वेव्स आर स्टनिंग. द ब्लूमिंग फ्लावर, ये हियर द ब्लूमिंग इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग द फ्लावर्स. फ्लावर्स इज अ नाउन, तो इसको जो डिस्क्राइब कर रहा है वो ब्लूमिंग. ब्लूमिंग इटसेल्फ इज अ वर्ब. ब्लूम, ब्लूम्ड, ब्लूम्ड. ठीक है जी, हमने इसको ब्लूमिंग किया और उसके बाद हमने इसको रोल प्ले किया एडजेक्टिव का. Then after that, another example की तरफ हम आते हैं, तो he is walking on running tracks. He is walking on running tracks. Here, run is basically a verb. हमने ing को put किया और हमने इसे present participle बनाया. और tracks is a noun. Running tracks, running tracks, running tracks. Again, another example की तरफ आते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे देखा था कि हमने कहा था कि past participle में en लगता है. Role वो adjective का ही play करेगा. He is broken heart. He is broken heart. टूटा हुआ दिल. ठीक है जी. Heart is a noun और इसको जो elaborate कर रहा है, इसको जो qualify कर रहा है, इसको जो describe कर रहा है, the role of an adjective, that is broken. Last example की तरफ हम चलते हैं. My resident is near to newly constructed building. My resident is near to newly constructed building. Constructed building. Constructed is basically an adjective. Construct, constructed, constructed is also a verb. But here it is performing the role of an adjective, being the participle, past participle. Constructed building. Building is a noun. और उसको जो elaborate करे, उसको जो qualify करे, that is basically constructed. इसके बाद हम वर्बल की थर्ड टाइप की तरफ जाते हैं. व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्बल, थर्ड टाइप ऑफ वर्बल. इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ, थोड़ा सा एलैबोरेशन के साथ हम इस चीज को डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टेक एन ओवरव्यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द infinitive. An infinitive is a verbal that acts as an adjective, adverb or noun. अच्छा, वहां पे हमने देखा gerund जो है वो एज अ नाउन रोल प्ले कर रहा है. Participle जो है वो एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, either in the form of a present participle or a past participle. But if we, as far as concerned with the infinitive, infinitives तीन रोल प्ले कर सकते हैं मुख्तलिफ सेंटेंसेस में, मुख्तलिफ किस्म की नौइयत के साथ, मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन के साथ. ये तीन किस्म की जो है वो रोल्स जो है वो प्ले कर सकता है. एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर सकता है, एडवर्ब का रोल भी प्ले कर सकता है, एंड द थर्ड वन इज इट्स आल्सो performing the role of a noun. An infinitive is a verbal that acts as an adjective, adverb, or noun. These verbs are always accompanied by the word to, except to. ये कंपेन करते हैं टू के साथ, यानी कि टू के साथ इसको, टू इज बेसिकली प्रेपोजिशन और इसके साथ हम एक वर्ब को पुट करते हैं. मोस्टली द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम पुट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली एन इन्फिनिटिव. टू, टू एक्ट, टू रीड. और हमेशा ये बात याद रखिए, जहां पे भी आप टू पुट करेंगे सेंटेंस में, इट्स बिसाइड द टॉपिक, जहां पे भी हम टू पुट करेंगे और अगर हमें उसके आगे वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, तो वी विल नॉट यूज any other form of the verb, not ing, not ed, not en, not first and not second form, not third form. We shall always use the first form of the verb with preposition to, as we have mentioned here in the example, that to act, act is the first form of a verb. To read, read is the first form of a verb. So here we go with the examples. So what are basically the example of infinitives? We will take these example as a form of a sentence. To start, you need a positive attitude. To start, you need a positive attitude. To start, you need a positive attitude. Another example with the infinitive. To succeed in this round was my only hope of medal. To succeed in this round was my only hope of medal.
देखिए यहाँ पे हमने टू स्टार्ट, यहाँ पे जो हमने इन्फिनेटिव यूज किया, दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ नाउन। टू स्टार्ट, शुरू करना, यू नीड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। शुरू करने के लिए आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। सो अनदर बेसिकली एग्जांपल इज टू सक्सीड। To succeed is basically the role of an adjective in this specific sentence. It is playing the role of an adjective. uh, then after that, to succeed in this round was my only hope of medal. To succeed in this round was my only hope of medal. And the third example, yesterday I started to read. Yesterday I started to read. यहाँ पे भी जो basically role play कर रहा है, that is the role of to read. To read is basically an infinitive. To के साथ हमने first form को use किया, यहाँ पे हमने to के साथ second form को use किया. तो it is not necessary. कुछ केसेस में, यानी कि एडजेक्टिव के कुछ केसेस में, जब हम इन्फिनेटिव को एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ केसेस में हम इसके साथ सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। बट इफ वी आर यूजिंग इन्फिनेटिव एज ए नाउन, तो हम हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सक्सीड, यहाँ पे भी आपकी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। और उसके बाद थर्ड जो एग्जाम्पल हमारे पास जिस सेंटेंस की है, yesterday I started to read, तो इसमें भी यहाँ पे भी हमारे पास वर्ब की जो है वो first form lagi hui hai. So these are basically detailed discussion about the verbal and its types. Hope you liked the video. Hope you have got a lot of information. Hope you have got a lot of knowledge from these videos. We will inshallah bring lots of new videos, lots of knowledge about the grammar, about the English. Specifically, we are talking about the HSSC 1 and HSSC 2. We will not only discuss about the grammatical portions, we shall also discuss about the text portion of the books, like a textbook of HSSC 1 and HSSC 2. So here we have ended this topic here. We have ended this lecture here. And if you like our video or lecture, then subscribe our channel and press the bell icon. Don't forget to press the bell icon. And I'm very thankful to all of you that you have watched this video. And inshallah we will bring more interesting and more entertaining kind of videos for you students. Thank you so much, and Allah Hafiz.